Good morning, students. Now we are here in your English class where we were seeing lesson number 1 of English, that is mango birds. हम mango birds को पढ़ चुके थे, इसकी रीडिंग हो चुकी थी and you have to read it again and again. Isn't it a very interesting story, students? Yes, it is. So हमने कुछ exercises basically कर ली थी. We completed exercise B. Now today we are doing exercise D. Open exercise D from your book of pearls. It is given on page number 10. Okay, students, we are doing today exercise D, where you have to tick the correct answers. Tick the correct answers. Question number first. देखिए क्वेश्चंस दिए हैं और उनके फिर आपको 3 क्लूज दिए हैं. यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे ज्यादा उचित जो पर्याय है उसको आपको चुनना है. ठीक है, क्लूज का मतलब होता है पर्याय और आपको उसको टिक लगाना है. सो पहला है क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन आई रीड. यू फोकस ऑन पेज नंबर 10 and this question number 1. Okay, put your finger. The sun grew hotter and the sun hotter हुआ. Hotter means और ज़्यादा गर्म होते गया. And tree were full of birds. A option में है tree were full of birds. Option B, mango began to dry up. Option C, mango grew bigger. So क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सुटेबल है यहाँ पर स्टूडेंट्स? द मैंगो ग्रीव बिगर. मैंगोज ग्रीव बिगर मतलब मैंगोज जो है वो बड़े बड़े होते गए. समर में जो मैंगोज है वो बड़े भी होते हैं और फिर वो जूसी भी होने लगते हैं, वो पकने भी लगते हैं, है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द सन ग्रीव hotter and it is answer. Okay, answer C, mangoes grew bigger. Mangoes grew. Okay students, this is your answer. Then second question, the monkeys ate half of each. The monkeys ate half of each mango and then it is question. Okay, the monkeys ate half of each mango. मतलब बंदरों ने ate means खाया. eat का सेकेंड फॉर्म है ate, है ना. ये B1, B2, B3, B4. eat second form ate, third eaten, fourth eating. ओके, सो ये वाला फॉर्म है. मंकीज ने आधे आम खाए, हर एक आम को आधा आधा खाया. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? व्हाट आर द ऑप्शंस हियर स्टूडेंट्स? द ऑप्शंस आर half eaten mangoes were wasted. मतलब आधे खाए हुए आम वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए, खराब हो गए. Wild rabbits and the deer ate the rest. जंगल में रहने वाले रैबिट्स मतलब खरगोश and deer मतलब हिरण, उन्होंने उनको खाए. रेस्ट मतलब जो बचे हुए थे उनको खाए. Someone picked it up and ran away. किसी ने उनको पकड़कर मतलब उठाए, किसी ने मैंगोस को उठाए और भाग गए.
तो कौन सा अप्रोप्रिएट लगता है स्टूडेंट्स आपको कि मैंगोज वेस्ट हो गए, कि रैबिट और डियर ने उन्हें खाए, कि किसी ने उनको उठाकर कोई उनको उठाकर भाग गया? हमारी स्टोरी में हमने पढ़ा है कि जो हाफ ईटन मैंगोज थे दे वर नॉट वेस्टेड, ऑल्दो मीन्स दे वर ईटन बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स सच एज रैबिट एंड डियर। दूसरे एनिमल्स जो ट्रीज पर क्लाइंब नहीं कर सकते थे उन्होंने उन मैंगोज को खाया, जिससे कोई वेस्टेज नहीं हुआ। सो व्हाट इज योर अप्रोप्रिएट आंसर स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन बी, वाइल्ड रैबिट्स and the deer ate the rest. ओके, मतलब रैबिट्स और डियर ने बाकी के खाए। ये रैबिट्स का प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म रैबिट, प्लूरल रैबिट्स, और डियर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों डियर ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, सिंगुलर प्लूरल आपको समझता है ना? वन एंड मेनी। वन मीन्स अलोन, अकेला, सिंगुलर। मेनी मीन्स टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा, वो प्लूरल। ओके, सो क्वेश्चन थर्ड, द मैन डिड not listen to the tree god and that greedy man who went to the jungle to pluck the mangoes and he was plucking many mangoes in his sack, है ना? मतलब वो लालची आदमी जो जंगल गया था और बस मैंगोज तोड़ते ही जा रहा था, तोड़ते ही जा रहा था। ट्री गॉड ने उसको बोला कि यू कैन ईट हाउ मेनी यू वांट्स बट लीव फॉर अदर्स। ओके, सो उन्होंने कहा था कि दूसरों के लिए भी रखो, लेकिन वो सुन रहा था क्या? नहीं, वो नहीं सुन रहा था। तो यहाँ पर हमारे क्लूज है, केप्ट प्लकिंग मैंगोज, स्लेप्ट अंडर अ ट्री, पिक्ड अप हाफ ईटन मैंगोज। ऑप्शन ए कह रहा है केप्ट प्लकिंग मैंगोज, मतलब वो आम तोड़ता ही रहा, उसको ट्री गॉड ने कहा फिर भी उसने नहीं सुना, वो तोड़ता ही रहा। सेकेंड, स्लेप्ट अंडर ट्री, मतलब वो झाड़ के नीचे सो गया। और थर्ड, पिक्ड अप हाफ ईटन मैंगोज, मतलब आधे खाए हुए मैंगोज को उठाकर चला गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने स्टोरी पढ़े, क्लास में भी पढ़े एंड घर में भी पढ़े। सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दैट आवर ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मीन्स मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? दैट इज केप्ट प्लकिंग मैंगोज एंड योर आंसर इज ए, केप्ट प्लकिंग मैंगोज। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जहां पर ये क्लू दिख रहा है अपने बुक में वहां पर उसको टिक कर देना है। ये वाला क्लू यहाँ पर टिक करना है और इसमें यहाँ पर टिक करना है और अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखना है। बुक में आप सही आंसर को टिक करेंगे और कॉपी में आप सही आंसर के साथ वो क्वेश्चन उतारेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन 4। What is question 4? Sorry, we don't have enough place. So firstly I erase this all, then we will write here upwards. So question 4 है, whenever the man reached out to grab the mangoes, जब वो व्यक्ति जब मैंगोज कैसे उसने बोरे में भरा, फिर वो निकलने लगे बोरे में से, तो जब वो उनको पकड़ने के लिए गया क्या हुआ?
The mangoes jumped back into the sack. Jumped back into the sack. He kept stumbling and falling. The mangoes jumped and rolled farther away. So what will be the answer for this? It will be C. The mangoes jumped and rolled farther away. That answer is given where? On page number, it is 7. See here. The mangoes jumped and rolled farther away. मतलब mangoes sack से कूद गए और बाहर निकल गए. So fourth question's answer is C. You have to tick C option. Okay, students. Now we will see our exercise. Exercise not one sentences making activity. Okay. Sentences making activity means आपको अपने मन से सेंटेंस बनाना है. जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड को अपने खुद के वाक्य में लेना है. What is the time? Okay, so I give you facilities homework, and if you are not able, you tell me. We will take them all in class. I will tell you how to use those words in your own sentences. Okay, so right now you have to write the homework. The homework is use the following words in your own sentences. The words are birds, second animals. These are nouns, okay students. Then fly, this is verb, fly, F-L-Y. Okay, fly. Fourth, jump. And fifth, greedy. Greedy is what? Adjective. So greedy का अगर आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप बना सकते हैं. I'm not a greedy boy. Birds are flying in the jungle. Fly, birds are flying in the sky. Or I want to fly, है ना? और jump, monkeys jumping on the ground. Or monkeys are jumping on the branches of tree, whatever you can. So you have to use these words in your own sentences. Okay, students, so do this, and if you get difficulties, share that with me. Bye.